First of all, I'll take this opportunity to wish each and every individual sitting right here in the hall, and not just women, very, very happy International Women's Day. I say this because today morning I was interviewed by a radio channel. The interviewer was a male, I was also a male, and we were enjoying this, that he was wishing me an International Women's Day and I was reciprocating him. So International Women's Day has got to be celebrated by each and every individual, each and every component of the society, and that is why I first of all take this opportunity to wish you all a very happy International Women's Day. Now, I understand I am standing amidst a lot of challenges, and the biggest challenge is to speak after Mr. Dinesh Singh ji. If I ask you, टीवी का कोई पॉपुलर प्रोग्राम आपको याद है? KBC देखा होगा. मैं आपसे पूछूं कि KBC के बाद कौन सा प्रोग्राम आता था, आपको याद है? तो मेरा हाल भी सर वही है. आपको सुनने के बाद कोई मुझे नहीं सुनेगा. So that is a big challenge. And ये बात काफ़ी हद तक सही इसलिए भी है क्योंकि मैं भी बरसों से आपको सुन रहा हूँ, और सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ बल्कि समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ. Few things that I would certainly like to speak, largely before the participants that we have received. Sir, a recent phenomena has been that our university got affiliation from colleges of 4 new districts. So I am told we have received participation from 2 districts in this program, and similarly we are planning for other districts as well. From the district of Lakhimpur and Sitapur, is it? So I welcome you all. These colleges have recently been affiliated to our university, and I believe for many of you this might be your maiden visit to a formal program. Our objective with this is to propagate not just the concept of new education policy, the action orientation of new education policy that University of Lucknow has adopted. And I proudly say this because, sir, I know you are a pioneer thinker of many of the concepts that went into the making of this new education policy. But I proudly say that we are a pioneer institution in implementation of new education policy in university system in the entire country. Especially with our postgraduate program, we implemented this from the academic session 2020-21 in our postgraduate program, and from the academic session 21-22 in our PhD and UG programs as well. So all our programs are 100% NEP compliant, and in this week-long workshop, a lot of intricacies of this new education policy implementation will be taken up, especially for the participants who are coming for this program. Another important thing is that you are very appropriately talking about the concept of transdisciplinarity when the people are still struggling to comprehend the difference between the concept of multidisciplinarity and interdisciplinarity. Few days back I was part of a meeting where a lot of intellectuals, I would say, several vice chancellors for that matter, there was quite a discussion on this concept and implementation of interdisciplinarity and multidisciplinarity across different sections of education and research. But you so appropriately laid the concept of transdisciplinarity in educational institution, not just in terms of education but also in terms of outcome of education, which is
actually the very cause for any education. And for that I request the participants to, देखिए एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, परिवर्तन एक it is said the only constant in the world is change, and change management is a 3-step process. So we first unfreeze where we are, then we move where we actually want to go to, and then we refreeze. So modern concept does not talk about learning. Those who are from psychology discipline would be knowing learning is a concept that talks about creating a relatively permanent change in one's behavior arising out of one's own experience. The modern concept is of unlearning. So from learning to unlearning, भूल जाइए जो सीखा है, जो सर बहुत सटील तरीके से बहुत सारे elaborations में अपने उन्होंने बताया, and relearn. Now this is part of relearning. This entire workshop, week-long workshop, is aimed at implementation of the concept of relearning, because obviously because of the reason for change. And since there is a change, not just in terms of content, not just in terms of curriculum redesign, not just in terms of examination, holding of examination, but of course in terms of the change in the society and the change through which we are getting our students. So when the content got changed, the student is changed, we also have got to change, because if we remain the way we were and who we were, we shall not be able to transfer this. Government educational institutions के लिए ये और बड़ा challenge है, because the kind of facilities that are offered by private educational institutions, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं इस हॉल में, और आप याद करके बताइए कि आप में से कितने लोग घरों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में, इंटर तक की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं. शायद बहुत थोड़े से लोग होंगे, परसेंटेज 2-4-5%. धीरे धीरे ये फिनोमेना हायर एजुकेशन के लिए भी आ रहा है. क्यों आ रहा है? अभी तक आपको बच्चे को मेडिकल एजुकेशन देनी है तो आप एम्स सोचते हैं या सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन सोचते हैं. इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी है तो यू लुक फॉर IITs. यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिलाना है तो यू लुक फॉर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. लेकिन ये चेंजेस आ रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में आए, बिकॉज वी रीमेन वेयर वी वर. सो इफ वी शैल नॉट बी एबल टू चेंज एंड मीट द डायनामिक्स ऑफ द इकोसिस्टम, we shall perish. Government of India has very appropriately realized this, and they are working on transforming these institutions. And in the recent budget of 22-23, with respect to higher educational institution, a lot of newer initiatives have been talked about, especially about digital university and the concept of digital teachers and virtual labs and so on, to counter the phenomena of distance and resources. So what government initially designed was created a non-personal media of communication through internet technology, established the physical infrastructure, the hardware. Now they are working on transforming the software. You and I are the softwares for that. ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको आपको अब तैयार रहने की ज़रूरत है. सर ने बहुत बड़ी बात एक कही कि साहब बोर्ड पे लिखिए और बच्चे को ट्रांसफ़र कर दीजिए. ये एक टीचर कर रहा है, बरसों से कर रहा है, बट देन आउटकम ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आवर स्टूडेंट्स आर फेसिंग एंड एट द एंड आवर एजुकेशनल सिस्टम इज फेसिंग. अब समय आ गया व्हेन आवर टीचर्स नीड टू गेट अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ गुरु. वो कब होगा? जब हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, एग्जिबिट करेंगे अपने बिहेवियर से. ये कब होगा? जब हम को लर्निंग के कॉन्सेप्ट में कूदेंगे. तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है
जो मेरा निवेदन आप सभी जो तमाम शिक्षक हैं इस कार्यक्रम में सहभागी, that we have to design, sir talked about the tripling of the cattle and earning wealth through that. ये वही कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम समुच्चय the amalgamation of workforce के स्टेट में आए और म्यूचुअल लर्निंग को ऑगमेंट करें फॉर ग्रेटर गुड ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी. एंड आई बिलीव एक सर की बात से ही एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि टीचिंग एंड देन एजुकेशन, इससे बड़ा स्पिरिचुअल प्रोसेस मुझे कोई नहीं दिखा अपने जीवन में. स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी थियरीज यू माइट हैव सीन, जिसमें एक आम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ स्टेट ऑफ निर्विचार की अवस्था. थॉटलेसनेस, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस इज कंसिडर्ड टू बी स्पिरिचुअलिटी. ये सबसे आम परिभाषा कही जाती है. बहुत सारी थियरीज हैं इसकी. इसमें जो सबसे प्रीवेलेंट थियरी है वो कहती है कि इट इज अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग. वो अवेकनिंग किस अवस्था में, जब मुझे मालूम है कि मैं देख रहा हूं वहां और मुझे मालूम है कि इधर एक व्यक्ति ने अपना मोबाइल उठाया, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरी पिछली लाइन क्या थी और मेरी अगली लाइन क्या होने वाली है, और वो लाइन को स्ट्रे भी नहीं जाना है. तो जब हम क्लास में होते हैं तो हमको मालूम होता है, इफ आई एम टेकिंग अ क्लास, आई नो कि हमने इसके पहले कौन सी थियरी बताई. उस थियरी में मैथमेटिक्स में बहुत सारी थियरम्स आप लोग प्रूफ डिस्प्रूव करते रहते हैं. 7 पेज 8 पेज की थियरम्स हैं, हमको मालूम है पहले पेज में ये लिखा, आगे वाले पेज में ये लिखना है. एट द सेम टाइम हमको ये भी मालूम है कि वो बच्चा बगल वाले से बात कर रहा है, वो उसने अपने मोबाइल निकाल लिया, वो सोने जा रहा है, और हमको ये भी मालूम है कि मेरी अगला स्टेप इस थियरम का क्या है. ये स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये स्टेट ऑफ अवेकनिंग है. यही एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है, और ये तभी संभव होगा जब हम और आप दोनों मिलकर वी ट्राई टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन and the learning for greater good of the education. I am so not just thrilled but also indebted to you, sir, for having come to this institution and delivered such a wonderful talk. We shall also seek permission of you कि हम आपका लेक्चर अपने यूनिवर्सिटी के YouTube चैनल पे डाल सकें. सर के लेक्चर्स YouTube चैनल पे तमाम उपलब्ध हैं, तो उसमें this will be on our channel because we have got student strength of about 2 lakh plus, so they may also get benefit. And otherwise also our website is one of the most watched website of educational institutions. So thank you very much, and thank you all, especially the participants who have come. Examinations are going on despite their colleges have spared them for this learning exercise. So try to take the maximum advantage of your stay for the program. Thank you very much.